Okay, Ji, can you see the screen? जी सर। अच्छा, तो हम बेसिकली ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। बेवरेज स्ट्रक्चर था, देयर वर 4 कॉफीज एंड देन देयर इज अ कॉन्डिमेंट डेकोरेटर स्ट्रक्चर and it is composing the component type which is a beverage. And then we started seeing the implementation. First of all, we saw the implementation of beverage class and the implementation of get description and implementation of description, and cost method is abstract. Then we saw the abstract condimented decorator class, which is extending beverage, this class, and we have again made get description as an abstract class so that its child should be able to implement get description. Then we saw one implementation of concrete component, that is coffee espresso, which is extending beverage, and in the constructor we are setting its description, and we are it is returning its exact cost. And then we saw another implementation of concrete component, which is house plan, and we set its cost as 0.89, and similarly we can set cost of all the 4 concrete components that are coffees. And now we will see the implementation of condiments. And for condiments we saw the implementation of mocha. And in the constructor of mocha, once we are creating its object, we are passing the object that is to be wrapped in mocha. So it means that the object to be wrapped should be instantiated first, and then we will instantiate its decorator. So whenever we pass the object to be decorated, it is kept as a reference in the object, and from here the decorator knows that I have decorated this object which is in my reference list, in beverage list. And in its get description and cost method, it is making use of the object which it has composed or wrapped or decorated. We may use alternate words. So if we see the get description method, it is basically delegating the get description task to the object which it has wrapped, and it is saying calling the get description of the object which it has composed. So if house blend is composed, then house blend will be get description is being called. So whatever is returned, that is concatenated with the mocha, which is its own property. Similar is the concept of the cost method. It is this cost method of mocha is delegating its operation to the object which it has composed during construction instantiation. It is calling cost of the object being composed. So this is a concept of a delegation. Get description is delegating its task to the object which it is composing or wrapping, and cost method is delegating its task to the object with which it has composed. So this we discuss. Any question on this slide 30 number 32? Okay, so this is complete structure reverse engineered from the Java code. There is a condiment decorator hierarchy, and there is a beverage hierarchy, and condiment decorator is also type of beverage, and condiment decorator has a reference of a beverage class instead of key having 4 separate beverage references. So now let's serve
some coffees. So first of all, there is a client who says that I need plain espresso. So simple, a plain espresso object of plain espresso is created, and in a beverage object, and then we are calling printing a chit by calling beverage dot get description and beverage dot cost. So in this way, we'll get cost of plain espresso. Second client says that I need dark roast with double mocha and whip. So an object of beverage two, dark roast is created and saved in beverage two. Then a new mocha object is created, and this originally created beverage two is passed to the new object, and whatever and the new object is then replaced with the previous object in beverage 2. So here you can see beverage 2, beverage 2, beverage 2. The same object is being decorated or being enhanced in each statement. So again, the fresh beverage 2 object which is already composing, which is of mocha 2 and composing dark roast, is again being passed to new mocha object, and again the complete reference is being saved again in beverage 2 object. So you can see in each line of the statement, we are building up the beverage 2 instance variable. So finally, beverage 2 is composing WIP. So it means that now WIP is the outermost object, level 2 object is this mocha, level 3 this mocha object, and the deepest object which is at the root is dark roast object. So here it is written, make dark roast object, wrap it in mocha, wrap it in second mocha, wrap it in whip. Now we need to print a chit of the order chit. So we are going to call beverage 2 dot get description. So recursively, whip get description of whip is going to call get description of this mocha. This mocha is called going to call get description of the mocha inside the other mocha, and then it is going to call the get description of dark roast. And dark, dark roast will return its description. It will be received by Mocha. Mocha will add its own parameter. It will pass to Mocha. This Mocha will again pass its own values. It will receive by the WIP. Then WIP is going to add its own values, and then the total description will be prepared. Same will happen with the cost method. The cost method will be the cost method of WIP. The cost method of WIP is going to call cost method of Mocha. This Mocha is going to call cost of deep Mocha, inner Mocha, and this inner Mocha is going to call dark roast of inner dark roast. And again, the values of each are going to be returned and added, and finally the added value will be printed in the chit. And same will be the case for the third order, that is for on beverage 3. And same is explained here for especially for beverage 2. If we see beverage 2, the outermost object is whip, then mocha, inner, then inner one is mocha, inner mocha, and then the inner dark roast. So this is how the whole hierarchy is going to be built. And if we see the
um, uh, state machine, sequence diagram for the plain espresso. If we see for plain espresso in the main method, first of all, the object of espresso is going to be created, and espresso, the espresso is going to call the get description of the beverage. Here you can see new espresso object. It will call the beverage, but इसमें just ये न्यू एक्सप्रेसो ऑब्जेक्ट है, और अगर हम न्यू एक्सप्रेसो ऑब्जेक्ट को देखें तो it is going to fill in the description, and this description object is defined in its parent beverage class, और उसी को fill up कर रहा है. So that's why we are seeing that once we create an instance of espresso, it gets reference of the beverage because it is filling up the description object of the beverage class. And in the second statement, it is calling the get description of beverage object. Here you can see that get description of beverage object is being called, which is here. Get description is being called, and then cost method of its own cost method is being called here. So this is how you can try to relate the code with the sequence diagram. Here you can see the hierarchy. For example, we have seen, first of all, new dark roast object is being created, then new mocha object is being created, and this beverage 2 is being added. Then another mocha object is created and beverage 2 is added, and other final whip object is created and beverage 2 is added. Now the final outer object is whip. Outer object is whip. This is the lifeline of whip object. So once we call the get description of whip, this get description is calling the get description of mocha. This get description is calling get description of second mocha, and this second mocha is calling get description of the dark roast object. And dark roast object is now will start returning the description one by one, and description string will be prepared, and finally this description will be returned back to the main method. This is main method. Same will happen with the cost method. Outermost cost will be called. It is going to call the cost of its inner object mocha. Then this mocha will call the second mocha. Second mocha will call the innermost dark roast cost, and then the values of cost is going to be returned. So this value is returned to the upper object, and this cost is returned, and it is being added as well. Why it is being added? Because here you can see the implementation of cost method. It is it is calling the composed object, and whatever value is returned, it is added to the original cost, whatever cost is added. So cost is prepared, and finally here complete cost is prepared, and this cost is then returned back to the main method, and then it is printed. So this is how it would be printed for object 2, dark roast coffee, mocha, whip, which is the outermost, and the total cost 1.49. Same will happen with
the third object as well as espresso. Espresso doesn't have any decorator. It is plain espresso. This dark roast is with three decorators, and again the last one is also with three decorators. So, what are the advantages of decorator structure which we are going to get? First of all, for price change in any of the beverage or the condiment, only specific class is required to be changed. पूरा स्ट्रक्चर हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसी क्लास को सिर्फ हमें चेंज करना पड़ेगा instead of replacing many classes. Then if new beverage or condiment can be added without changing existing code, and flexibility to keep separate the beverages and condiments at design time and composing the desired combination at runtime. So we are getting flexibility. We can add new beverages. We for price change only specific classes will be changed. अगर इन क्लासेस का कोड भी हम किसी टेक्स्ट फाइल में रख लें या डेटाबेस में रख लें तो इनका कोड भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा. So, but in the for academic purpose, the discussion of database is not relevant here. So, final you can see a generic structure of decorator pattern, that there is a concept of component and a concrete component, and there would be some sort of operation which has to be implemented by the concrete component as well as the decorator. But decorator will have a reference of the component. It will give it ability to compose any concrete component or compose any concrete decorator. And concrete decorators are here at the bottom. You can see a new concrete decorator can introduce any new state, and it can introduce any new behavior for extending the state or behavior of the concrete component. So, any question on this generic structure? जी मैं अपने आप से तो नहीं बातें कर रहा. No, sir. I hope I am online. समझ आ गया. अच्छा ठीक हो गया. So key use cases for the decorator pattern. It adds additional functionality and responsibilities dynamically. ठीक है, पहला ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डेकोरेटर को conceptualize करें तो then it can also remove functionalities and responsibilities dynamically. Then it avoids too much of subclassing to add additional responsibilities. Otherwise हम subclassing से extend कर सकते हैं कोड, लेकिन है कि अगर बहुत too much subclassing can be avoided by dynamically adding responsibilities through decorators. So homework, see 2 more examples of decorator patterns from the net. ये आपका सिंपल होमवर्क है, उसका कोड को देखें ताकि आपकी थोड़ी सी डिफरेंट दो तीन केस स्टडीज देखें तो आपको थोड़ा सा और इसका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएगा. सो इट एंड्स टुडेज लेक्चर. एनी क्वेश्चन और क्यूरीज? सर हम बेस क्लास के किसी इम्प्लीमेंटेशन को भी यूज तो कर सकते हैं ना विदाउट डेकोरेटर पैटर्न? जी दोबारा क्वेश्चन करें. सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम अगर कोई डेकोरेटर पैटर्न की तरह मतलब कोई डेकोरेशन ना ऐड करें तो हम बेस क्लास के भी जो इंस्टेंस हमने बनाया उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना विदाउट डेकोरेशन? हाँ, जैसे हमने एक्सप्रेसो में एक्सप्रेसो की एग्जांपल देखी हमने. अब पैटर्न तो पूरा बना हुआ है, बट इन एक्सप्रेसो वी आर नॉट यूजिंग एनी डेकोरेटर. सिंपल प्लेन हम ऑब्जेक्ट भी यूज, जहाँ पे डेकोरेटर हमें यूज करना पड़ रहा है वो हम कर भी रहे हैं. तो यहाँ पे बगैर डेकोरेटर के प्लेन एक्सप्रेसो भी यूज करें और जितने डेकोरेटर्स यूज करने हैं वो भी कर सकते हैं. इट इज गिविंग अस फ्लेक्सिबिलिटी.
ओके सर। सर जो वाकई में फूड चेन्स वगैरह हैं वो डेकोरेटर पे ये सिस्टम्स बनाते हैं फूड के जो एक्चुअली ना ये तो भी मैं 1 by 1 पैटर्न पढ़ा रहा हूँ ना आपको। एक्चुअल ऑब्वियसली डेकोरेट ये ऐसे कॉमन पैटर्न है जो कि यूज हो रहे होते हैं इन एप्लीकेशंस के अंदर। असल में जब एप्लीकेशंस होती हैं जो एक्चुअल एप्लीकेशन होती है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स एक ही वक्त में यूज हो रहे होते हैं। तो आप एज अ डेवलपर आप तभी उन सारे पैटर्न्स को एज पर योर यूज़ कर सकते हैं आपके बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि अच्छा इसकी क्या यूटिलिटी है और कैसे इनको यूज़ करना होता है। तो फिर आप मल्टीपल पैटर्न्स भी एक एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं और होते हैं एक्चुअली। ये नहीं कि सिर्फ एक पैटर्न पे पूरी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है ठीक है जी। और एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा ओवरऑल कंसर्न था कि अगर हम हर पार्ट पे, हर डेकोरेटर के पार्ट पे एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारी स्पेस काफी यूटिलाइज नहीं होगी। स्पेस एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखें तो सारी गेम ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे है। कोई एक भी ऑब्जेक्ट आप उठा लें तो उसकी तो जो है वो इट हैज़ लॉट मैनी कंपोनेंट्स। लेट जस्ट मी शो। मैं आजकल वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ छोटी सी चीज़। मैं सिर्फ एक ब्राउज़र में आपको दिखाता हूँ कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। लेट मी ओपन इट इन क्रोम। ये पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये फॉर एग्जांपल इसका इंस्पेक्ट मॉड्यूल है क्रोम का। ये इसका कंसोल है। कंसोल के अंदर एक रूट ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट के नाम से। सर ठीक है जी। अच्छा सिंपली मैं चलें और कुछ भी नहीं करता, सिंपल मैं डॉक्यूमेंट ही एंटर करता। ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है जो है। अब इसको अगर आप खोलें आप इसकी, अच्छा खैर इसमें तो इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है। इसमें मैं विंडो का ऑब्जेक्ट खोलता हूँ। ये भी रूट ऑब्जेक्ट होता है। ये विंडो का ऑब्जेक्ट है और विंडो ऑब्जेक्ट में आप देखें तो ये इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं और इसके अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स कितने हैं देखते हैं आप। ये सिर्फ एक रूट ऑब्जेक्ट है विंडोज़ का जो कि पूरी की पूरी सारी प्रॉपर्टीज जिसकी आप व्यू भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मतलब मकसद बताने का ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो बेताशा ऑब्जेक्ट्स जो भी आपका कोई भी विंडोज़ भी एक क्रिएट हो रही है, एक वेब पेज भी क्रिएट हो रहा है तो उसकी जो है वो इतने सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं बेताशा किस्म के। तो स्पेस का इशू नहीं है आजकल। पॉइंट ये है जिस जो डिवाइसेस आजकल हम यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप्स टैबलेट्स वगैरह, अब ये इशू नहीं है। अगर ये स्मूथ चल रहे हैं हमारे ब्राउज़र्स का मतलब है कि बेताशा हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए होते हैं और चीज़ें चल रही होती हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव द आंसर। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी चलें फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। मेरे ख्याल में कोई आजकल चल रहा है कि जी शायद एक आधा वीक आगे करें। अगर वीक आगे हो गया डिसीजन हुआ तो फिर हम रूटीन में चलते रहेंगे, अदरवाइज सर हो गया। एक क्लास लेनी सर पड़ेगी। हो गया मैसेज आ गया। सर आप क्लास हो गया लेंगे इस वीक डिसीजन? में? अच्छा नहीं तो फिर क्लासेस पूरी करनी है इसीलिए तो एक वीक एक्स्ट्रा दिया उन्होंने कि ये कि जो क्लास मिस हुई है वो क्लास अब पूरी कर लें। एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो एक ले लेंगे अर्ली ताकि आपको एक वीक मिल जाए यस थोड़ा सर सा अर्ली ले लें। तैयारी के लिए। ये क्या चलें वो फिर डिसाइड सर करूँगा। सीआरटी ठीक है कंफर्म वो बाद करवा में कर लें। लेंगे आज जी क्या हुआ?
क्या सर कह वो रहे हैं? सिया से वोट करवा लें सर, ज्यादा बेहतर है।